Lord Prabhu Daya Hare Hare Sadai ऐसे प्रभु सच्चे गए कृपया कर अवतार ये अखय श्रवण Gaura Prabhu Doya Moya Tanirayana Sadoya Sepaya Tanara Shamana Mataji, please. Eche Prabhu Satigare Kripala Kalavatare Iya Naraya Shavana Gaura Prabhu Doya Yana Sadoya Sepayata Narasarana. Word for word translation. Ache, in this way, Prabhu, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Shachigare, in the home of Sachidevi, Kepaya, by His causeless mercy, Kaila, made, Avatare, Advent, Yea, anyone who, Iha, this, Karaye, thus, Shravana, here, Gaura Prabhu, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Doyamaya, being very merciful, Tanre, upon him, Ayena, becomes, Sadaya, merciful, say, that person, Paya, gets, Tanara, his, Charana, lotus feet. Translation. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu, out of his causeless mercy, made his advent in the house of Sachidevi. Lord Chaitanya is very merciful to anyone who hears this narration of his birth, and thus such a person attains the lotus feet of the Lord. इस तरह चैतन्य महाप्रभु अपनी अनंत की कृपावश शची देवी के घर में अवतरित हुए। चैतन्य महाप्रभु उस व्यक्ति पर अत्यंत कृपालु होते हैं जो उनके जन्म के इस वृतांत को सुनता है। ऐसा मनुष्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करता है। Om Jnanatimanasya Jnanjala Shanaka Sakshamritam Yena Tasmai Shigurave Namah Chaitanya Manopistam Staptam Yena Bhutale Svamrupkadamyam Dadati Svapalantikam Vandeham Shiyo Shiyuda Padakamalam Shiyum Vaishnavam Sha Shirupam Jagajatam Saganaragnatam Tam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parjana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saganalita Shivishakam Vitam Shahe Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jyatpate Kopesha Koprakanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamama Haripriye Vankha Kalptrabhisha Kripas Nvaivasha Patiyan Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Namo Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine. Nirvishesha Srinyavadi Paskachai Desatarane. Srila Prabhupada Ki. This verse of Chaitanya Charitamrta explains that Lord Chaitanya is very merciful to one who hears the narration of his birth. इस श्लोक में चैतन्य चरितामृत के श्लोक में बताया गया है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु उस व्यक्ति पर अत्यंत कृपालु हो जाते हैं जो उनके लीलाओं के इस वृतांत को सुनता है. So it is our fortune to be present at this festival today. तो आज हम इस उत्सव में उपस्थित हैं, ये हमारा सौभाग्य है. Lord Chaitanya, he appeared during the month of Falguna. The month of Falguna is going from mid-February to mid-March, Srila Prabhupada says. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु फाल्गुन मास में अवतरित हुए. श्री प्रभुपाद कहते हैं कि फरवरी मध्य से मार्च मध्य तक ये फाल्गुन महीना चलता है. And he appeared on a Purnim day, the full moon day. और वो फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए. And at that time there was a lunar eclipse. और उस समय चंद्र ग्रहण भी था. It was in 1485, 30 months for his appearance, 1485, that the Supreme Personality of Godhead entered the womb of Mother Sachi. ये 1485 की बात है. चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव के 13 महीने पहले वे शची माता के गर्भ में प्रविष्ट हुए. When Lord Krishna appeared in Mathura, first he appeared in the mind of Vasudeva. जब भगवान कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए तो पहले वे वसुदेव के मन में प्रविष्ट हुए. And then he transferred himself to the heart of Devaki. और वहां से उन्होंने स्वयं को देवकी के हृदय में स्थानांतरित किया. In the same way, the Lord appeared first in the mind of Charitamrta Mishra. इसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु पहले जगन्नाथ मिश्र के मन में प्रकट हुए. And then he transferred himself from the heart of Charitamrta Mishra, from his mind to... Then he transferred himself from the mind of Charitamrta Mishra to the heart of Mother Sachi. और फिर भगवान ने स्वयं को जगन्नाथ मिश्र के मन से शची माता के हृदय में स्थानांतरित किया. That happened in 1485. 1485 में ये हुआ. And Lord Chaitanya stayed in the womb of Mother Sachi for 13 months. और भगवान चैतन्य शची माता के गर्भ में 13 महीने तक रहे. 30 months, that's unusual for medical standards. 13 महीने चिकित्सा के मापदंडों के हिसाब से कुछ ज़्यादा है. But in 1986, the Lord appeared. तो 1486 में जो है भगवान महाप्रभु प्रकट हुए. So that was right at the time of the moonrise. तो वे उस समय था जब चंद्रोदय हो रहा था. So we are expecting the moon to rise this evening at 7:30, right? That's the time that Lord Chaitanya appeared. तो हम भी ऐसे करते हैं कि आज 7:30 बजे चंद्रोदय होगा. उस समय चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे. But astrologers predicted a lunar eclipse at that time. और ज्योतिषियों ने उस दिन चंद्र ग्रहण होगा ऐसी भविष्यवाणी की थी. These astrologers even so many years ago were expert in calculating this moon eclipse and predicting it.
तो जो ज्योतिषी हैं वो इस तरह गणना करते हैं कि और गणना करके बताते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण इस समय पे होगा. So at that time of the lunar eclipse, then Lord Chaitanya appeared. तो जब उस समय चंद्र ग्रहण था उसी समय चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए. Of course, it was the full moon. It was the time of the full moon. निश्चित रूप से ये पूर्णिमा का समय था. But Gaura Chandra is also the full moon. लेकिन जब गौर चंद्र है वो गौर चंद्र भी जो है पूर्ण चंद्रमा की तरह है. So when Lord Chaitanya appeared, the moon felt embarrassed. तो जब गौर चंद्र प्रकट हुए तो इस चंद्रमा को बहुत शर्मिंदगी का अनुभव हुआ. Because the real full moon is Gaura Chandra. लेकिन वास्तविक पूर्ण चंद्र तो गौर चंद्र ही है. Therefore, he eclipsed. इसलिए उस चांद में अपने ग्रहण लगा लिया. Of course, a moon eclipse is mostly inauspicious. निश्चित रूप से ऐसा रहता है कि चंद्र ग्रहण जो होता है वो ज्यादातर अशुभ होता है. We saw also 5,000 years ago all the Yadus and the Vrishnis and residents of Vrindavan. They went to Kurukshetra at the time of the eclipse. हम ये भी देखते हैं कि 5000 वर्ष पहले यदुस या वृष्णि या ब्रज के निवासी भी ग्रहण के समय पे कुरुक्षेत्र में गए थे. So when there is an eclipse, people go to the Ganges to take bath. जब इस तरह ग्रहण का समय आता है लोग गंगा नदी में नहाने के लिए जाते हैं. And they chant the holy names of the Lord. और वे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं. So, in other words, due to the appearance of Lord Chaitanya, this inner moon eclipse became the most auspicious time. तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु चंद्र ग्रहण के दिन प्रकट हुए, इस अशुभ समय सबसे शुभ समय बन गया. Of course, Lord Chaitanya, his mission was to make the entire world to chant the holy name of the Lord. निश्चित रूप से भगवान चैतन्य का मिशन यही था कि पूरा जगत भगवान के नामों का कीर्तन करे. So at the time of his appearance, he made the whole world chant the holy name of the Lord. तो अपने प्राकट्य के समय ही उन्होंने पूरे जगत को हरिनाम करवा दिया. And even the Muslims were jokingly imitating the Hindus and they were chanting Hare Krishna also. यहाँ तक कि मुस्लिम लोग जो थे वो भी हिंदुओं की नकल उतार के वो भी हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे थे. So that was the Lord's mission, to chant, to start the chanting of the holy name all over the world. And when he appeared, everyone was chanting the holy name. He made the whole world chant the holy name, the holy names. उनका मिशन था कि पूरे संसार के द्वारा उनको प्रेरित किया जाए वो हरिनाम लें, और भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तब पूरा संसार हरिनाम ले रहा था. Lord Chaitanya, when he appeared as a baby, he would cry a lot. भगवान चैतन्य प्रकट हुए तो जब छोटे बच्चे ही थे तो वो बहुत ज्यादा रोते थे. And all the mothers were sitting around him. सारी माताएं उनके चारों बैठी रहती थी. So at that time, the mothers were at home with the children, not in the factory or the office. उस समय माताएं जो हैं बच्चों के साथ ही समय बिताने में देखभाल करती थी, ऑफिस फैक्ट्री वगैरह सब. So, and of course, Nimai, he got the name Nimai because he appeared under a Nimai tree. उनको निमाई नाम मिला क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे. But he would cry a lot, and
one of the mothers said, "Oh," she said, "Oh, Hari is always crying." लेकिन वो हमेशा रोते थे बहुत, और जिस तरह माँ किस तरह बोलती थी, वो हरी हमेशा बहुत रोता रहता है। So like someone said, "Oh my God," it's तो इस तरह होता है ना, oh my God, that, "Oh Hari," and when she said Hari, Lord Chaitanya, Nimai, stopped crying, and he showed a big smile. जैसे ही वो कभी इस तरह बोलती ओ हरी, तो चैतन्य महाप्रभु रोना बंद कर देते और उनके बहुत मुस्कान उनके चेहरे पर। Hari, he would stop crying. समझ में आ गया कि जब ये रोते हैं तो हम हरी बोलेंगे तो ये रोना बंद कर देते हैं। So he made them chant the holy name. तो इस समय से चैतन्य महाप्रभु ने उनसे हरि नाम बुलवाया। Once Nimai, there was a snake in the garden, a big snake. एक बार निमाई जहाँ रहते थे वहाँ पे बगीचे में एक बड़ा सांप आ गया। And Nimai ran to the snake and embraced the snake. और निमाई सांप की ओर दौड़े और सांप को गले लगा दिया। And all the mothers were in anxiety that dangerous snake, and they tried to get Nimai away. और सारी माताएं बहुत चिंतित हो गई कि इतना खतरनाक सांप आ गया और निमाई को बहुत दूर ले जाने का प्रयास करने लगे। And they took him away from the snake. और उन्होंने निमाई को सांप से दूर खींच लिया। But Nimai liberated himself and ran again to the snake and embraced it. लेकिन निमाई अपने को छुड़ा के फिर सांप की ओर भाग गई और उसके बाद फिर सांप को गले लगा लिया। And when they wanted to separate him from the snake, he was crying, "My snake, my snake!" जब वो उसको सांप से दूर करने का प्रयास कर रहे थे, निमाई चिल्लाने लगे, मेरा सांप है, मेरा सांप है। But yes, finally, they separated him from the snake, and the snake went away. आखिरकार उन्होंने निमाई को सांप से छुड़ा लिया, सांप दूर चला गया। Of course, this snake was Ananta Shesh. ये जो सांप था, ये थे अनंत शेष। But in his youth, he did not manifest himself as the Yuga avatar, as the Supreme Personality of Godhead. लेकिन इस युग में चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को युगा अवतार के रूप में प्रकट नहीं किया। So he went to school with his schoolmates. His schoolmates were Gadadhar, Mukunda, and others. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जब स्कूल गए तो स्कूल में उनके सहपाठी थे मुकुंद, गदाधर। And they said to Nimai, you should chant Hare Krishna. और वे निमाई से बोलते थे, निमाई तुमको हरे कृष्णा कीर्तन करना चाहिए। So they were all devotees, क्योंकि वे सभी तो पहले भक्त थे। and Nimai was laughing. और निमाई हंस रहे थे। So he would mock them like he was opposing them. तो वो निमाई उनका एक मजाक उड़ाते थे, मानो उनका विरोध कर रहे हैं। He said, "Why chanting? You should learn Sanskrit grammar." निमाई बोलते हैं कि चैंटिंग की क्या जरूरत है, इससे अच्छा संस्कृत व्याकरण सीखनी चाहिए। You should engage in logic, debate, arguments, rhetoric. आपको तर्क में, बहस में, न्याय, ये सब शिक्षाएं प्राप्त करनी चाहिए। So Nimai would debate with them. तो निमाई उनके साथ तर्क वितर्क करते थे। And he would defeat their arguments. और उनके तर्कों को निमाई परास्त कर देते थे। And then the roles reversed. He asked them to defeat him with his arguments. तो उसके बाद निमाई बोलते थे
इसको रिवर्स कर देते थे कि अब मेरे तत्वों को आप लोग हरा के बताओ. So when they took Mukunda and Gadadhar and so on, when they took the position formally taken by the Lord, then they used all the Lord's arguments to defeat, that he used to defeat them. They used these arguments. तो फिर निमाई को हराने के लिए जिन तर्कों से निमाई ने उनको हराया था, मुकुंद और गदाधर उन्हीं तर्कों का उपयोग करके फिर निमाई को परास्त करने का प्रयास करते थे. But the Lord would defeat them again. लेकिन फिर निमाई उन तर्कों को फिर हरा देते थे. So that went on for some time. तो इस तरह से कुछ समय तक ये महाप्रभु की लीला चलती रही. One day Mukunda said to Nimai, I wish you would become a devotee. एक दिन मुकुंद ने निमाई से कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक दिन आप भक्त बने. And Lord Chaitanya Nimai said, well, to make you happy, I will become a devotee. और चैतन्य महाप्रभु निमाई ने कहा, हाँ, आपकी प्रसन्नता के लिए एक दिन मैं जरूर भक्त बनूंगा. And he said, I will become the topmost devotee. और उन्होंने कहा, मैं सबसे अच्छा भक्त बनूंगा. Lord Brahma will come to take the dust of my lotus feet. भगवान ब्रह्मा मेरे चरण कमलों की धूल लेने के लिए आएंगे. Mukunda was thinking, this is too much, too much. A devotee doesn't speak like that. मुकुंद सोचने लगे कि ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं. खाली भक्त लोग इस तरह की बात करते हैं. So once Nimai went to the house of Shivas. तो एक बार निमाई शिवास ठाकुर के घर पे गए. And at the house of Shivas, that Shivas was worshipping the Salagram Shila. और वहाँ पे शिवास शालिग्राम शिला की पूजा कर रहे थे. So he came in the house of Shivas, he put aside the Salagram Shila, and he sat on the altar. तो वो शिवास शपथ करने गए, शालिग्राम शिला का एक पास रख दिया और खुद ऑल्टर में बैठ गए निमाई. But then he started to reveal this relationship with all the devotees. लेकिन तब उन्होंने सारे भक्तों के साथ अपने संबंध को वहाँ पे प्रकट करना शुरू किया. First he called in Murari Gupta. पहले उन्होंने बुलाया मुरारी गुप्त को. Murari Gupta, he was a doctor. मुरारी गुप्त एक डॉक्टर थे. And he would treat his patients materially and spiritually. और वो अपने मरीजों का भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके से इलाज करते थे. He would prescribe medicines for their disease, and he made them chant Hare Krishna. उनकी बीमारी के लिए दवाई लिखते थे और साथ में हरे कृष्ण मंत्र भी उनसे बुलवाते थे. So they got cured materially and spiritually. तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप से उन लोगों का इलाज होता था. And so he called in Murari Gupta, and he said, Murari Gupta, look at me. तो उन्होंने मुरारी गुप्त को बुलाया और उनसे कहा, मुरारी गुप्त मेरी ओर देखिए. And Lord Chaitanya, well, Murari Gupta looked at Lord Chaitanya, and he didn't see Lord Chaitanya, he saw Sita and Ram. तो मुरारी गुप्त ने चैतन्य महाप्रभु की ओर देखा और चैतन्य महाप्रभु नहीं दिखे, बल्कि वहाँ पे सीता और राम दिखे. Of course, Lord Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nai Anga. Lord Chaitanya is Radha and Krishna together. निश्चित रूप से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं हैं, वे राधा और कृष्ण का युगल रूप है. So Murari Gupta saw Lord Chaitanya as Sita Ram. तो मुरारी गुप्त ने चैतन्य महाप्रभु को देखा सीता राम के रूप में. And then Murari Gupta looked at Nityananda and he saw Lakshman. और फिर मुरारी गुप्त ने नित्यानंद प्रभु की ओर देखा तो वहाँ लक्ष्मण दिखाई दिए. And Murari Gupta said to Lord Chaitanya, who appeared as Sita Ram, he said, where is Hanuman? मुरारी गुप्त ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, सीता
राम की तरह प्रकट हुए थे, बोले हनुमान कहाँ है? And Lord Chaitanya said, "Oh, look at yourself." बाबा चैतन्य ने कहा, अरे अपने यहाँ देखो। Then, and then he saw that he was Hanuman. फिर मुरारी भक्त ने देखा कि मैं तो खुद ही हनुमान हूँ। So many things happened there. तो इस तरह वहाँ बहुत सारी Then लीलाएं he called in Haridas Thakur. उन्होंने हरिदास ठाकुर को बुलाया। And Lord Chaitanya said, "You remember that you have been beaten in 22 marketplaces? और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको याद है कि आपको 22 बाजारों में पीटा गया था And that you didn't feel anything of the beatings, that you remained unharmed?" और आपको कोई दर्द का अनुभव नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी आपको। And Lord Chaitanya said, it was I who protected you. और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये मैं ही था जिसने आपकी रक्षा की। I received all the beatings on my back. वो सारे जो पिटाई थी वो उससे मैंने अपनी पीठ पे सहन किया। And then, yes, he showed his back, and Haridas Thakur could see that there were all these injuries on his back from being beaten. फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पीठ भी दिखाई और हरिदास ठाकुर ने देखा कि वे सभी जो पिटाई के निशान थे वो उनकी पीठ पर थे। Haridas Thakur then fainted. हरिदास ठाकुर उस समय बेहोश हो गए। It was at that time that Lord Chaitanya started the night kirtans at Shiva's Thakur's house. उसी समय की बात है Shiva Sangram, yeah. जब शिवास ठाकुर के घर में उनके आंगन में चैतन्य महाप्रभु ने रात्रि संकीर्तन आरंभ कर दिया था। But then soon they went into the streets to chant the holy names of the Lord. और बहुत जल्दी ही वे फिर वहां से गलियों में जा करके नगर संकीर्तन करने लगे। But soon the Muslim police came and destroyed their mridangras and said, "Do that never again." लेकिन बहुत ही जल्दी मुस्लिम पुलिस आई मुस्लिम और उन्होंने मृदंग तोड़ दिए और कहा कि अब दोबारा ये अन्याय मत करना। But Lord Chaitanya mobilized millions of people to go to the house of the Chantkasi. लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा आयोजन किया कि लाखों लोग चांद काजी की तरफ मशाल लेकर गए। I think we know all the pastime, but even if you go there today, you will see apparently Muslims with beards and. तो दोस्तों आपको ये लीला तो पता ही होगी, लेकिन आज भी यदि आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बाह्य रूप से बहुत सारे मुस्लिम दिखाई देंगे दाढ़ी वगैरह के साथ। So they look like Muslims, but they are very nice to the devotees. तो वो दिखते हैं मुस्लिमों की तरह, लेकिन वे भक्तों के प्रति बहुत ही स्नेह रखते हैं। They like to see the devotees. भक्तों को देखना पसंद करते हैं। So that was the beginning of the Sankirtan movement, which is now spread all over the world. तो ये है संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत। And which continues to be spread all over the world. और वो उस समय आरंभ हुआ और ये निरंतर आगे बढ़ता ही रहेगा पूरे संसार में। Although it is says Dosha Nidhe Kali Yuga is an ocean of faults. हालांकि ये कलयुग है दोष निधि, ये दुर्गुणों का एक सागर है। Still there is one good thing in Kali Yuga. फिर भी इस कलयुग में एक अच्छी बात है। Just by chanting the holy name, we can attain perfection. सिर्फ हरिनाम का कीर्तन करने से ही हम चरम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। And this is the external reason for the appearance of Lord Chaitanya. और ये है चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का बाह्य कारण।
first he appeared to show how to surrender to Krishna in this age. पहले वो ये बताने के लिए प्रदर्शन करने के लिए प्रकट हुए कि इस युग में कृष्ण की शरण कैसे ग्रहण की जाए. He appeared as Bhaktarupa in the form of his own devotee to show how one should practice devotional service in this age. वो पहले भक्त रूप में प्रकट हुए अपने भक्त के रूप में ये दिखाने के लिए कि इस युग में भक्ति में जीवन का अभ्यास कैसे किया जाए. Now, about the identity of Lord Chaitanya. Now, I will speak about the identity of Lord Chaitanya. Bhakti Chaitanya used to explain that in Goloka, Vrindavan, there are two chambers, two parts. So one part is Goloka Vrindavan and the other part is Navadvip. And Lord Krishna is simultaneously present in both. But in Goloka Vrindavan, Radha and Krishna are eternally separated. And in Navadvip, Radha and Krishna has become one. This makes sense because all the pastimes of the Lord are eternal. So he's eternally separated from Radha and Krishna and is eternally one, Radha and Krishna together. So, Lord Chaitanya is in the mood of Srimati Radharani. Why is that? Because Lord Krishna in Goloka Vrindavan was wondering that what does Srimati Radharani feel for me? What does she feel and why is she attracted? And what is it in me that attracts her? And it seems she is more enjoying than me. I want to experience that. These are three internal reasons, confidential reasons for the appearance of Lord Chaitanya. So Lord Chaitanya appeared in the mood of Srimati Radharani. And he experienced the feelings of separation from Krishna. He feels the ecstasy of Srimati Radharani. Especially in the Antya Lila, which describes the last 11 years of Lord Chaitanya's presence in this world, that there these feelings of separation, this ecstatic love is fully expressed.
विशेष रूप से अंत लीला में जो आखिरी 11 साल चैतन्य महाप्रभु ने जो बिताए, वहाँ पे राधा रानी से विरह की जो भावनाएं हैं, कृष्ण से विरह की जो भावनाएं हैं, वो उसे पूरी तरह प्रकट करते हैं राधा रानी के भाव में। He enters the mother, the madness of love of Srimati Radharani, what she experiences. श्रीमती राधारानी का जो कृष्ण के प्रेम में जो पागलपन है, उसको जो है चैतन्य महाप्रभु ने अनुभव किया उन आखिरी वर्षों में। But that makes Lord Chaitanya the most magnanimous incarnation. चैतन्य महाप्रभु हैं परम महावदन्य अवतार। And that's explained in the Chaitanya Charitamrta, in the 4th chapter, the internal reasons for the appearance of Lord Chaitanya. और इसको चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 4थे अध्याय में समझाया गया है, जहाँ बताया चैतन्य महाप्रभु के प्रकटने के अंतरंग कारण। Lord Chaitanya has given what has never been given before. भगवान चैतन्य ने वो दिया है जो आज तक कभी नहीं दिया गया है। What is that? What he gave, what was never given before? ऐसा क्या उन्होंने दिया जो कि पहले कभी नहीं दिया गया था? Before the appearance of Lord Chaitanya, everyone could go, who attained spiritual perfection, could go to Vaikuntha. चैतन्य महाप्रभु के पहले कोई भी व्यक्ति जो आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करता, वो वैकुंठ तक ही जा सकता था। But not Goloka Vrindavan. लेकिन गोलोक वृंदावन नहीं। Because how do you get into Goloka Vrindavan? क्योंकि गोलोक वृंदावन आप जाएंगे कैसे? It's good to know. Huh? Good to know. हाँ, ये जानना अच्छा है हमारे लिए। Rupa Goswami explains in Nectar of Devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu. श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में ये समझाते हैं। One can enter Goloka Vrindavan only by the mercy of a resident of Vrindavan. कोई व्यक्ति गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर सकता है केवल वृंदावन के किसी वासी की कृपा के माध्यम से। So in Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami, there you have the story Narada Muni is searching for the most perfect devotee. तो बृहद भागवतमृतम पुस्तक में सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं एक कहानी जिसमें नारद मुनि सर्वश्रेष्ठ भक्त की खोज करते हैं। It's a long story, but finally he arrives at the gopis. कहानी ये लंबी है लेकिन अंत में वे गोपियों तक पहुंचते हैं। And the most perfect gopi is Radharani. और सबसे श्रेष्ठ जो गोपी हैं वो हैं श्रीमती राधारानी। So by the mercy of a resident of Vrindavan, we can enter Vrindavan. तो वृंदावन वासियों के पास से ही हम वृंदावन में प्रवेश पा सकते हैं। But who is Lord Chaitanya? लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु कौन है? He is Radha and Krishna, he is Srimati Radharani, in the mood of Srimati Radharani. वो है राधा कृष्ण एक साथ, मतलब वो श्रीमती राधारानी के भाव में है। And now, very interesting, Bhakti Chaitanya Maharaj used to stress that point. अभी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बताया जा रहा है, इसे श्री भक्ति रसन गुरु महाराज बहुत जोर देकर समझाते थे। Just by worshipping Lord Chaitanya in awe and reverence, one can get entrance to Goloka Vrindavan. श्रद्धा और सेवा के साथ भगवान चैतन्य की पूजा करने से ही, सेवा करने से ही व्यक्ति गोलोक वृंदावन में प्रवेश पा सकता है। So we are in Lord Chaitanya's Sankirtan movement. तो हम हैं भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन में। These pastimes of Lord Chaitanya are still going on in the form of in Sankirtan movement. चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं आज भी जारी हैं संकीर्तन आंदोलन के रूप में। Lord Chaitanya sent his great field commander,
Srila Prabhupada, he predicted that he would come. श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने महान सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद को भेजा और इसकी भविष्यवाणी थी कि वे आएंगे। Lord Chaitanya predicted that I will send in the future my field commander and he will spread the holy name everywhere. श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि मैं भविष्य में अपने सेनापति भक्त को भेजूंगा जो कि हरिनाम को सर्वत्र प्रसारित कर देंगे। And if some escape to foreign countries, he will still get them and give them the holy name. और यदि कोई विदेशी देशों में जाके छुप जाता है तो वो वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी उनको हरिनाम प्रदान करेंगे। Obviously, Lord Chaitanya is speaking about Srila Prabhupada. निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद के बारे में बता रहे हैं। And Srila Prabhupada engages us in the mission of Lord Chaitanya. और श्रील प्रभुपाद ये चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हमको भी सम्मिलित करते हैं। So by engaging in Srila Prabhupada's preaching mission, we take part in Lord Chaitanya's pastimes right now. तो श्रील प्रभुपाद के प्रचार आंदोलन में जब हम अपने को युक्त करते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में हम अभी भी भाग ले सकते हैं। And we will get Lord Chaitanya's mercy. और भगवान चैतन्य की कृपा हमको प्राप्त होगी। Lord Chaitanya's mercy means the mercy of Srimati Radharani. भगवान चैतन्य की कृपा का अर्थ है श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करना। And then our entrance in Goloka Vrindavan is guaranteed. और तब गोलोक वृंदावन में हमारा जाना एकदम गारंटीड है। So today is a day to pray for the mercy of Lord Chaitanya. तो आज वो दिन है जब हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना करें। And by His mercy, as this verse said, we will attain His lotus feet. और उनकी कृपा से हम उनके चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हैं। Thank you very much. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki, Shri Gaura Purnim ki, Srila Prabhupada ki. Yeah, if there are questions. Yeah, there are a few, but maybe we need a mic. Hare Krishna Maharaj, thank you so much for narrating such wonderful pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and you explained that tattva as well. So I had one little question that when you explained that Lord Chaitanya and Radharani, they come together, they combine and means together, they in the combined form perform pastimes in Navadvip. And at the same time we say that Krishna has taken the mood of Radharani. So still means Radharani is separate, or how we can understand? They become one, or only mood is... Yeah. हरे कृष्ण महाराज, आपने बहुत अच्छे से समझाया तत्व और चैतन्य लीलाओं के बारे में। तो हम बताया कि नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण एक साथ हैं और वहाँ संकीर्तन आंदोलन को चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन साथ में बताया कि वो राधा रानी के भाव में है, तो क्या फिर भी राधा रानी अलग है, केवल राधा रानी का भाव लिया है, या वो दोनों एक ही एक साथ है? I heard this explained very nicely by Bhakti Charamaj. मैंने श्री भक्ति चरण स्वामी गुरुमा सम्मुख से ये सुना था, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको समझाया था। The Supreme Lord Krishna is energetic. पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वो है शक्तिमान। And as energetic, the Lord has his energies. और शक्तिमान होने के नाते भगवान की कई शक्तियां हैं।
So the energy, the Shakti is Srimati Radharani. तो वो शक्ति है श्रीमती राधा रानी। So the energetic and the energy, Bhakti Chaitanya explains, so the energetic and the energy has become one in the appearance of Lord Chaitanya. तो महाराज बताते हैं कि शक्ति और शक्तिमान चैतन्य महाप्रभु के जो अवतार इसमें एक हो गए। Of course, that's inconceivable for our material brain to understand. निश्चित रूप से भौतिक बुद्धि के माध्यम से इसको समझ पाना हमारे लिए अचिंत्य है। Lord Krishna says in Bhagavad Gita, I can only be understood by Ananya Bhakti, pure devotional service. भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मुझे केवल अनन्य भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। So that's the inconceivable mystery. तो ये एक अचिंत्य रहस्य है। Not much more I can say about. इससे अधिक इस बारे में मैं कह नहीं सकता। Any other question? Well, two more hands. और कोई प्रश्न? Hare Krishna Maharaj, I have one question that, like you said right now, that Chaitanya Mahaprabhu goes on other planets also, right? So I wanted to ask, is ISKCON also present other than Earth also? I didn't understand it. He's saying that you mentioned Chaitanya Mahaprabhu goes to other planets also. So is ISKCON also present on the other planets other than this earthly planet? महाराज से प्रश्न है कि महाराज आपने बताया कि इस्कॉन चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अन्य ग्रहों पर भी चलती रहती हैं, तो क्या इसका अर्थ है कि अन्य ग्रहों पर भी इस्कॉन है इस पृथ्वी के अलावा भी? First time, I don't remember saying such a thing. I said that Lord Chaitanya appeared. I explained that yesterday. He is appearing in the 28th Divya Yuga. In the 28th Divya Yuga of the present Manvantar. In the 28th Divya Yuga, he appears. Lord Krishna first appears at the end of Dvapara, and then following Lord Chaitanya appears. So that's in the scriptures. So Lord Chaitanya is a scheduled incarnation. तो ऐसा तो कुछ कल नहीं कि ये बात कब कही गई जो आप बोल रहे हैं, लेकिन महाराज जी बता रहे हैं, कल महाराज ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु जो 7th मनु है, 7वें मनु के 28वें दिव्य युग में भगवान कृष्ण द्वापर युग प्रकट होते हैं और उसके अगले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। ऐसा शास्त्रों में उनके आविर्भाव के बारे में बताया गया है। So whether he appeared on other planets, I don't know that. लेकिन अन्य ग्रहों पे वो प्रकट होते हैं ऐसा तो मैं नहीं जानता। But what is sure is the Sankirtan movement is not restricted to this planet. लेकिन इतना निश्चित है कि जो संकीर्तन आंदोलन है वो केवल इस ग्रह तक ही सीमित नहीं है। We know from the Bhagavatam that Narada Muni, in his previous life, he was a Gandharva. हाँ, शास्त्रों से श्रीमद् भागवत से जानते हैं कि नारद मुनि जो हैं वो उनके कृष्ण जीवन में एक गंधर्व थे। His name was Upabharana. उपवर्णन उनका नाम था। He was a beautiful Gandharva, and but he had a lot of attraction to the girls. तो वो बहुत ही सुंदर गंधर्व थे, इन स्त्रियों के प्रति उनका बहुत आकर्षण था। He was a bit in the mood of a playboy. वो प्लेबॉय के मूड में थे ज़्यादा। So then, yes, at a certain time, the great sages organized a Sankirtan festival.
तो एक समय पे जो महान जो साधु पुरुष हैं उन्होंने संकीर्तन उत्सव का आयोजन किया. And Upabarana, who was very beautiful and could sing nicely, वो गाना बहुत ही सुंदर थे और बहुत सुंदर गाते भी थे. he went me with his girlfriends to the Sankirtan festival. वो अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ संकीर्तन उत्सव में चले गए. And he was singing cinema songs. Songs, yes, Srila Prabhupada said cinema songs glorifying the demigods. और वहाँ पर वे फिल्मी गाने गा रहे थे. जिनको बताते हैं फिल्मी गाने मतलब जो स्त्रियां हैं वहाँ देवताओं की सुंदरता में वो गाने गा रहे थे. And the sages became angry. They said, "This is a Sankirtan festival to glorify the Supreme Lord, to glorify the demigods." तो वहाँ साधु जो है क्रोधित हो गए. बोले ये संकीर्तन उत्सव है भगवान की महिमा गाने के लिए और आप यहाँ देवी देवताओं की इनकी महिमा गा रहे हो. And they cursed him to become the son of a Sudra. और उनको श्राप दे दिया कि आप शूद्र की संतान के रूप में जन्म लोगे. So there we can see the Sankirtan movement is going on in the Bhagavatam. तो हम देखते हैं इस तरह भागवत में बताया है कि संकीर्तन उत्सव का अन्य जगहों पर भी आयोजन हो रहा है. But you have also the story of Chitraketu. He was a Vidyadhara, as kind of lower demigod. Yeah. हाँ, साथ ही हमें चित्रकेतु की कथा भी हमको सुनने में आती है. वो भी एक प्रकार से विद्याधर थे, मतलब निम्न वर्ग के देवता थे. And I think he was worshipping Anantashesh at Palatal, the lowest planet of the universe. He was worshipping him, and then he was going on traveling Sankirtan. ब्रह्मांडिक सबसे निचला जो ग्रह है वहाँ पे वे अनंत शेष की पूजा करते थे और साथ में भ्रमण करते थे संकीर्तन करते हुए. That he was traveling in a Vimana, a spaceship with many female companions, Vidyadhara demigods, and they were traveling and constantly chanting the holy names of the Lord. वे विमान में बैठ के बहुत सारी स्त्रियों से घिरे हुए भ्रमण करते रहते थे और साथ में भगवान की महिमा गाते थे, संकीर्तन करते रहते थे. So that's traveling Sankirtan. तो ये है ट्रैवलिंग संकीर्तन. Of course we know he came at Kailash. हम उसके आगे जानते हैं कि वे फिर कैलाश पर्वत पर आए थे. And he got cursed by Parvati. पार्वती माँ के द्वारा उनको शाप दिया गया. But yeah, sometimes we have these accidents on Sankirtan. कभी-कभी संकीर्तन करते हुए इस तरह हमारे साथ एक्सीडेंट हो जाते हैं. But anyway, it was his path to go back to Godhead, to taking the form of a so-called demon Vitrasur and then going back to Godhead. लेकिन ये उनके लिए आयोजन था कि वो जल्दी-जल्दी भगवत धाम जाएं. वित्रासुर नाम के कथाकथित असुर रूप में जन्म लिया और फिर भगवत धाम. So the Sankirtan movement is eternal. तो ये संकीर्तन आंदोलन नित्य है. It always existed. हमेशा से ये अस्तित्व में है. Does that help a bit? ठीक है, सोचता हूँ ये ठीक है. Okay. It's 8:03, I think. We should. 1 minute, we will start Guru Puja. Yeah, so we will prepare now for Guru Puja. Thank you very much. Shri Gaur Purnim ki, Shri Chaitanya Mahaprabhu ki, Srila Prabhupada ki.